Hi guys, so this is day 4 of this trip. तो शुरू से शुरू करते हैं. Greetings to all my fellow travelers and nature lovers to this hidden gem of the Sangla Valley. मैं हूँ नेहा, अ गर्ल इन द मिड्स, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन से अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम बजट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू सांगला एंड आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं. चलिए फिर. जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम कल ही रात कालपा आ गए थे. So we finally reached our resort for 2 nights and this is called the Banjara Camps. और हमने उस दिन पूरे दिन प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी. अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है so go and watch that now. I will link it here. To recap quickly, we reached Sangla from Kalpa after driving for around 2 hours. और अभी आपने जो ब्रिज देखा वो आपको मिलेगा जैसे ही आप कालपा एग्जिट करोगे और सांगला की तरफ बढ़ेंगे. दिस इज द खर्चम हाइड्रो प्लांट. पर प्लीज डू नॉट गो नियर द वाटर फ्रंट, एज यू नो इट्स अ डैम. तो यहाँ पे कभी भी फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, डैम का गेट्स खुल सकता है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, एडमायर दीज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अफार एंड बी रिस्पेक्टफुल. टाइम फॉर अ फन फैक्ट. वैसे सांगला सुनकर आपको कुछ याद आता है? वेल ये वही जगह है जहाँ पे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की मूवी लव आजकल की शूटिंग हुई थी. इनफैक्ट दे स्टेड इन द सेम विलेज बत्सेरी. अगर नहीं याद है, नॉट अ बिग डील, विल मूव ऑन. Well, in other words, Sangla Valley offers the quintessential Himachali experience with the bluest water of the Baspa River and the snow-clad peaks. You can get a sneak peek of the old era of Himachal. Having said that, you still have a flourishing market where you can find all the necessities. Sangla Valley is also known as the Baspa Valley. Baspa Valley because यहाँ पे Baspa river flow करती है अपने full might पे, and this place has a lot of camping options available near the river banks. There are multiple homestays and hotels available in Sangla also. Most popular ones are the Hotel Batseri and the Banjara Camps and Retreat where we stayed. I will link my detailed review of the property here. अगर आपको मेन सांगला टाउन में नहीं रहना है, so you can find accommodations in the nearby villages such as Batseri, Baturi, etc., which are all under the 8 kilometers radius. आप रक्षम विलेज में भी रुक सकते हैं, which is another hidden gem in the valley. I will tell you more about this in the next episode. फिर यहाँ पे अभी हॉस्टल खुला है सांगला में, which has just opened in 2022. So yep, that will attract all the fellow backpackers and solo travelers, I'm sure. You can find homestays and hostels here starting from rupees 600 per bed or room to luxury resorts and hotels going up to 8,000 per room. So you do you. That means if you're traveling on a budget, the guess is that you will find an accommodation that will suit your pocket. So अब बात करते हैं कि कौन से सीजन या मंथ में आपको यहाँ आना चाहिए. वेल ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए इस जगह पे देखने के लिए. अगर आपको स्नो देखनी है तो आपको आई थिंक जनवरी टू मार्च का सीज़न बेस्ट रहेगा. वैसे हमने अप्रैल फर्स्ट वीक में भी स्नो देखी है, सो वेल या दैट हैपन्स. ग्रीनरी देखनी है, लश माउंटेन्स देखने हैं तो मार्च से लेकर के जून तक का सीज़न इज़ बेस्ट फॉर यू. एप्पल सीज़न देखना है, देन कम in from September to November, early November.
The only time I would not recommend you to come here is in the monsoon season. Monsoons बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. यूजुअली 15 जून से लेकर के 1 सितंबर तक आई थिंक दे गो ऑन और फुल स्विंग में होते हैं. कभी भी बारिश और लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिमेंबर द अनफॉर्चुनेट लैंडस्लाइड्स दैट हैपेंड इन 2021. इस टाइम पे बहुत सारे टूर्स एंड ऑपरेटर्स आपको हाई डिस्काउंट्स देते हैं, बट प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दोज ट्रैप्स. आप सिर्फ अपनी जान को नहीं, बाकियों की भी जान को खतरे में डालते हैं. सो बी केयरफुल प्लीज. Sangla is known as the Devil on Wheels blog calls it the locus of many explorations and trekking trails. Needless to say, यहाँ पे बहुत तरीके के trekking options available हैं. You might have heard of the famous Kinnaur apples, right? Well, Sangla is one of the major towns who actually produces it. Not just that, it is also a major producer of apricot and walnuts. I bet you didn't know that. यहाँ पे आपको हिंदू एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का एक ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस मिलेगा, which makes the town the Tibetan wood carving center. Definitely explore the Batseri village. This is a quaint town in the Sangla Valley, around 8 kilometers away from the main town, which is not completely accessible by roads, which is why I feel it holds the old charm of a typical mountain village surrounded with apricot trees. Hi, good morning. So we are still in Banjara Camps and the morning was beautiful if you followed me on my Instagram. And now we are off to a little hike to Batseri and the route is walking next to the riverbed. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. We hiked up to the village and visited one of the biggest and the most beautiful wooden temples in Himachal. Made with stones and wonderfully hand-carved wood, it is the home of the local devtas, Shri Badri Narayan and Shri Vishnu Narayan. The temple has the same Upper Himachal temple architecture with some wonderful woodwork done by the local artisan. वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, पर अगर आपको जानना है नेटवर्क्स के बारे में तो यहाँ पे जियो और एयरटेल ही चलता है, तो बाकी कोई नेटवर्क नहीं चलेगा. सो कम प्रिपेयर्ड. बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए. अगर आप फैमिली के साथ भी आते हैं तो भी आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं. नॉट जस्ट ट्रैक्स इज़ योर ऑप्शन. तो कम हियर, स्पेंड 2 days एटलीस्ट, और या आई एम श्योर यू विल लव इट. आप कन्विंस हो गए कि मैं और बोलूं? वेल, अगर इससे ज़्यादा और रीजंस चाहिए आपको सांगला आने के लिए
तो कुछ नहीं, रिपीट पे देखो इस व्लॉग को. So that's it for today, guys. I'm ending my day 4 here. Do hit a like on this video, subscribe to my channel for more awesome content and the next vlog on the Kinnaur series. Please do follow me on Instagram. My handle is girl_in_the_myths for all the juicy stories and BTS. So keep traveling. I'll see you again. Ciao. Anyway